हाय एवरीवन, दिस इज अश्मिता एंड आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं नर्सिंग से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड हम सॉल्व करेंगे 5 to 6 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में। तो नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको 4 से 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे और जहां से आपको आंसर करने हैं। तो आपको ठीक से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो लेट्स स्टार्ट। A child's parent asks the nurse what treatment the child will need for the diagnosis of strep throat. स्ट्रेप थ्रोट के लिए कौन से ट्रीटमेंट सही है और नर्स क्या बता रहे हैं कि बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है नर्स का। फर्स्ट वन, योर चाइल्ड विल बी सेंट होम ऑन बेड रेस्ट एंड शुड रिकवर इन अ फ्यू डेज विदाउट एनी इंटरवेंशन। तो चाइल्ड जो है ना, the child may need bed rest. However, the child does not need antibiotics to treat the strep infection. तो ये तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। Second, your child will need to have the tonsils removed. Oh my God, to prevent the future strep infections. Um, no, not at all. This cannot be the best response. The child does not need to remove the tonsils. The child has strep throat. So, surgical removal of the tonsils is done only following recurrent bouts of infection. So, no, not required. Third one, your child will need oral penicillin for 10 days and should feel better in a few days. The child will definitely need a 10-day course of penicillin or amoxicillin to treat the strep infection. It is essential that the nurse always tells the family that although the child will feel better in a few days, but the entire course of antibiotics must be completed. So yes, we can consider this one as one of the best responses, but still we are going to see the last option also. Your child will need to be admitted to the hospital for 5 days of intravenous antibiotics. Strep throat जो है ना, that can be treated at home with oral penicillin or amoxicillin and does not require for like IV antibiotics and hospitalization. तो ये भी गलत हो गया। चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चाइल्ड इज कंप्लेनिंग ऑफ थ्रोट पेन, which statement by the mother indicates that she needs more education regarding the care and treatment of her child's pharyngitis? तो कौन से स्टेटमेंट से हमें लगता है कि बच्चे की माँ इंडिकेट कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा एजुकेशन चाहिए रिगार्डिंग द केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ चाइल्ड्स pharyngitis? Number one, I will have my child gargle with salt water 3 times a day. Gargling with warm salt water is recommended. Is a recommended treatment to relieve some of the discomfort which is associated with pharyngitis. But कौन से स्टेटमेंट ज्यादा अच्छा है वही हमें कंसिडर करना है। सेकंड ऑप्शन बोला जा रहा है कि आई विल ऑफर माय चाइल्ड आइस चिप्स सेवरल times a day. Encouraging ice chips is a recommended treatment to relieve some of the discomfort associated with pharyngitis. Third point, uh, I will give my child Tylenol every 4 to 6 hours as needed. So, acetaminophen, that is Tylenol, it's a suggested treatment for relief of discomfort related to pharyngitis. Okay, last point को discuss करते हैं. I will ask the nurse practitioner for some amoxicillin. Now, pharyngitis एक self-limiting viral illness है that does not require antibiotic therapy. Pharyngitis should be like treated with rest and comfort measures, including acetaminophen, जैसे कि Tylenol, throat sprays मिलता है अभी, cold liquids मिलता है, popsicles मिलता है। तो आपको ऑलरेडी पता है ये सब, तो ऑब्वियसली गो विद द लास्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ स्कूल एज चाइल्ड has been diagnosed with strep throat. The parent asks the nurse when the child can return to school. तो एक बच्चे को स्ट्रेप थ्रोट हुआ है तो नर्स को पूछा जा रहा है कि कब तक बच्चा स्कूल वापस जा पाएगा। Which is the nurse's best response? चलिए देखते हैं responses को। 48 hours after the first documented normal temperature.
तो स्कूल सिस्टम्स जो है that require the children to remain home for 24 hours after having a documented fever. However, in this question, the child has been diagnosed with strep throat. So even if the child is fever free, the child must have completed a 24-hour course of antibiotics before entering or returning to school. So children with strep throat are no longer contagious 24 hours after initiation of the antibiotic therapy. तो ये बेस्ट रिस्पॉन्स तो हमें तभी पता चलेगा जब हम सभी पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे. 24 hours after the first dose of antibiotics. Children with strep throat are no longer contagious 24 hours after initiation of the antibiotic therapy. तो इसको हम कह सकते हैं कि ये one of the best responses है till now. फिर भी देख लेते हैं बाकी दो options को. 48 hours after the first dose of antibiotics. Now, children with strep throat are no longer contagious 24 hours after initiation of the antibiotic therapy. तो ये तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रिस्पॉन्स हुआ. 24 hours after the first documented normal temperature. Now, school systems require that children remain home for 24 hours after having a documented fever. However, in this question, the child has been diagnosed with strep throat. Even if the child is fever free over here, the child must have completed a 24-hour course of antibiotics before returning to school. So, children with strep throat are no longer contagious, as I have been telling you all several times till now, contagious 24 hours after initiation of the antibiotic therapy. तो टिल नाउ सबसे अच्छा रिस्पॉन्स नंबर 2 ही था. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. A school-age child is admitted to the hospital for a tonsillectomy. During the nurse's post-operative assessment, the child's parent tells the nurse that the child is in pain. Which of the following observations would be of most concern to the nurse? Okay, तो पहला जो चीज़ है वो है the child's heart rate and blood pressure are elevated. The patient यहाँ पे is complaining of pain, so it is not unusual that there is an elevated heart rate and blood pressure. तो यहाँ पे nurse को address करना चाहिए ऐसे pain को by giving any PRN pain medications ordered or calling the healthcare provider for an order. Okay. पहले हम सभी पॉइंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद चूज करेंगे कौन से हम बेस्ट ऑब्जर्वेशंस कंसिडर कर सकते हैं. नेक्स्ट है द चाइल्ड कंप्लेन्स ऑफ हैविंग अ सोर थ्रोट. देखिए, मोस्ट चिल्ड्रन विल कंप्लेन आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी, तो दिस इज एक्सपेक्टेड. ओके. Thirdly, the child is refusing to eat solid foods. Now, oral intake is usually limited to popsicles, okay, like ice chips or popsicles and cold liquids following a tonsillectomy. So, the child is in pain right now and should not be expected to be eating solid foods 8 hours after surgery, okay. So, okay, next point, the child is swallowing excessively. Now, excessive swallowing is a sign that the child is swallowing blood. Okay, and this could be considered a medical emergency, and the healthcare provider should be contacted immediately. The child is likely bleeding and will need to return to surgery. Okay, तो ये एक सबसे ज़्यादा कंसर्न करने वाली बात बन गया. ठीक है, तो you will consider option 4 as the correct one. लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द नर्स इज रिव्यूइंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस विद द पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड हु had a tonsillectomy a few hours ago. The parents tell the nurse that the child is a big eater and they want to know what foods to give the child for the next 24 hours. What is the nurse's best response?
देखिए चलते हैं नर्स के रिस्पॉन्सेस पे। द चाइल्ड्स डाइट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड एट ऑल। द चाइल्ड्स डाइट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू क्लियर लिक्विड्स। द चाइल्ड्स डाइट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू आइस क्रीम एंड कोल्ड लिक्विड्स। द चाइल्ड्स डाइट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू सॉफ्ट फूड्स। फर्स्ट पॉइंट को अगर हम कंसिडर करेंगे तो चाइल्ड शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू सॉफ्ट फूड्स फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ डेज पोस्ट ऑपरेटिवली। तो सॉफ्ट फूड्स क्योंकि रिकमेंड किया जाता है बिकॉज द चाइल्ड विल हैव अ सोर थ्रोट फॉर सेवरल डेज फॉलोइंग द सर्जरी, सो सॉफ्ट फूड्स विल डिक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. ओके. Second, the child's diet should be restricted to clear liquids. Now, most children self-limit their food intake post-operatively. Children can have solids, but soft foods are recommended for the first several post-operative days. Third, the child's diet should be restricted to ice cream and cold drinks. Most children prefer to eat cold foods, but they are not restricted to them. Okay. Lastly, the child's diet should be restricted to soft foods. Now, soft foods, as I've already told, are recommended to limit the child's pain and to decrease the risk of bleeding. तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं. तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. अगर आपको इसी तरह से इंटरैक्टिव सेशंस चाहिए और आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए आप पढ़ रहे हो, उसके लिए आप हमारे क्लासेस में भर्ती हो सकते हो. उसके लिए जस्ट नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाके आप चेक कीजिए, वहाँ पे सभी डिटेल्स दिया गया है हमारे क्लासेस के रिगार्डिंग. कोई भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पे स्टडी मटेरियल्स का जो फैसिलिटी है वो हम प्रोवाइड करेंगे आपको. स्टडी मटेरियल्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पोर्टल एक्सेस हम प्रोवाइड करेंगे, लाइव लेक्चर्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज़, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स सोल्यूशन सेशंस, तो ये सब होगा. तो डू कॉन्टेक्ट अस, एंड अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं. दैट्स इट. थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड. चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में.